Hello students, in this video we will be solving the extra questions upon lines and angles chapter. In most of the videos you might have been came across the exercise solved question, but there are very few videos which are explaining you the extra questions upon this chapter. So here I have brought for you the extra questions regarding this chapter. So before watching this video, if you haven't solved the lines and angle chapter, I just suggest you just go through the basic of my video which have been made last time. इससे पहले I made one more video of basic of this chapter. Just go through once. After that, come to this chapter extra question. First solve exercise and come to extra questions. Okay, that will be easy for you. So let us solve it. So let us begin. As you can see, OC is our ray which is standing on a straight line. That is our AB. So you must we came across one property that is linear pair of angles. What do you mean by linear pair of angles? A ray is standing on a straight line. A ray is standing on a straight line. It forms two angles. Okay, and the sum of those two angles will be equal to 180 because they form a linear pair of angles. So इनका total, okay, most of what they do, you know, a single angle को लेके 6x plus 30 is equal to 180 days to take. That is completely and wrong. क्योंकि ये 6x plus 30 is single angle है. So you can't say 6x plus 30 is equal to 1, that is completely wrong. Remember that. That's why I will began with the basic question. Okay, a straight line के ऊपर one ray is standing which is forming two angles. ये दोनों angles का total will be 180. Total, okay, that is 6x plus 30. ये एक angle plus this is our second angle, that is 4x. दोनों का total क्या रहेगा? 180. Okay, this you can see variable, this is also variable. दोनों का variable same है. 6x plus 4x. If they are like terms, we can solve the like terms. 6x plus 4x will give me how much? 10x. 30 को लेंगे हम transpose. We're gonna transpose to right hand side, so is equal to 180 minus 30. So 10x is equal to 150. Cross cover. X is equal to 150 by 10. 0 0 cancel, so x is equal to 50. That is our x value. They said just to find out the value of x. By chance, in few of the time, in few of the question, they will be asking you find both the angles. तो कैसे find it करो? Let us see. AOC. AOC का वैल्यू कितना है? 6x plus 30. 6x plus 30. Very simple. 6 we gonna write down as it is again x. What is our x value? 15. So in the place of x we gonna substitute 15 plus 30. 6 into 15 will give me 90 plus 30. Total कितना रहेगा? 120. That is our value of AOC. Okay. अब next angle is which one? Can you just suggest me the name of that angle? BOC. Very good. So BOC. कितना है वैल्यू उसका? 4x. So 4 of x का वैल्यू है 15. So 4 into 15 will give me how much? 60. 60 degree is the angle of BOC. Okay. Now by chance किसी को verify करने के सब मेरा आंसर right या wrong है, so what you gonna do? दोनों को total करो. Okay, दोनों क्या है? Linear pair of angles. Sum of linear pair of angles should be equal to what? 180. So जब दोनों को add करेंगे हमारा total कितना आना चाहिए? 180. Then your answer is correct. Exact. 120 plus 60 will give me how much? 180. That means our answer is exactly correct. This was the first extra question. Let us go with the next one. Here I brought one more third one. Second one that is little bit basic. Okay, same way. One more I brought in the same kind of a question. Let us solve this once again. Then I'll go with the step by step. Moderate question, then tough question. Okay. Same thing. OC is a ray standing on a straight line. Again, two angles will be formed, and those two angles called as a linear pair of angles. With दोनों का total कितना रहेगा? 180. Same way we're gonna solve, that is 2x plus 30 plus 2x plus 10 will be equal to 180. Reason is linear pair of angles. These both are the variables, right? So 4x plus 30 plus 10 will give me 40 is equal to 180. So 4x is equal to 180. 40 को लेकर right side that becomes minus 40. So 4x is equal to 140.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो 140 by 4, 2 2s are 4, 2 70s are 2 1s are 2, 35s are. So x is equal to, we got it as how much? 35. The same way we are going to find the angles. They did not say, then we are going to find out. So angle AOC. AOC का वैल्यू कितना है? 2x plus 30. 2x plus 30. करना क्या है? कुछ भी नहीं, just x की जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 2 into 35 plus 30. So 2 into 35 will give me how much? 70 plus 30. 70 plus 30 will give me how much? 100. एक इसका वैल्यू है, that is angle AOC. The same way we are going to find out the angle BOC. BOC. Value is how much? 2x plus 30. Sorry, 2x plus 10. 2 x का वैल्यू कितना? 35 plus 10. 2 into 35 is 70 plus 10. 70 plus 10 will give you how much? 80. That is the angle of BOC. Okay. Again, I'll be asking you to verify what we're gonna do. We're gonna add them. उनका total क्या रहना चाहिए? 180. क्यों? Because they both are a linear pair of angles, and the sum of linear pair of angles is equal to how much? 180. So ये 100 है और ये 80. 100 plus 80 कितना आएगा? 180. That means our answer is exactly correct. Let us go a little bit of moderate. Let us go with the third one. Third one is also similar one, but not that tough one. Not about इसमें properties की ज़रूरत होगी. You should be familiar with the properties there. So all this problem is very easy. As you can see, they are saying to find out this angle. That is ABC. ABC. B center में. So we are going to find out B. B यहाँ पे. So ये angle को हमें find out करने का है. As you can see, this is in the shape of a triangle. Triangle का एक property. What is it? Sum of angles of a triangle is equal to 180. जब हम सभी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो उसका टोटल कितना आना चाहिए? 180. ये बाहर एक्सटीरियर, इसको नहीं. दिस आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. जब ये तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे उनका टोटल कितना? 180. दैट इज अ प्रॉपर्टी. ओके, बट टू फाइंड आउट दिस एंगल, ट्रायंगल में दो एंगल हमें मालूम रहना चाहिए. आई शुड बी नोइंग द टू एंगल्स. आई नो ओनली वन एंगल आई डोंट नो. टू फाइंड आउट दिस एंगल आई शुड नोइंग टू एंगल्स. करेक्ट? But ये angles को हम find out कर सकते हैं with the same concept what we applied for the last two columns, that is linear pair of angles. Okay, as you can see, this is the ray which is standing on a straight line. So these two angles form linear pair of angles. अब ये angle का नाम क्या है? ये angle कौन सा है? C. तो C को मुझे find out करने का, C कहाँ पे लिखना चाहिए? Center में. Where I should write down center. Okay, that means I can say A C B. और ये एंगल का नाम क्या है? ACD. ओके, इज इक्वल टू 180. प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ACD वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का, वी गोना राइट डाउन एज इट इज प्लस ACD का वैल्यू है 100 इज इक्वल टू 180. ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 100. सो ACB का वैल्यू कितना आएगा? दैट विल गिव मी हाउ मच? 80. सो इसका वैल्यू आ गया हमें 80. अब ट्रायंगल में दो एंगल पता है, दैट विल बी वेरी इजी टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल. रिमेंबर दैट वन. सो चलो नाम लिखते हैं. ये एंगल का नाम क्या है? ABC प्लस वो एंगल का नाम क्या है? ACB प्लस ये एंगल का नाम क्या है? BAC इज इक्वल टू 180. प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा? सम ऑफ angles of triangle are equal to 180. ABC हमें नहीं पता, that is what we have to find out. ABC को हम लिखेंगे as it is. ACB का वैल्यू है 80, BAC का वैल्यू है 100. Sorry, it is 40. 40 ये वैल्यू 40 is equal to 180. ABC plus 80 plus 40 will give me 120 is equal to 180. ABC is equal to 180 minus 120. So ABC is equal to 60. I hope so. This must be clear with the solution. Okay, not that tough, I guess, right? So चलो next question चलते हैं. There is a fourth one. This is a fourth one. Okay. So let us find out how to solve this one.
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक वैल्यू दिया है, डिड नॉट राइट डाउन व्हाट इज गिवन पार्ट, यू नो, दैट इज AB इज पैरेलल टू DE. This line and this line is parallel. Okay, parallel क्या है? I explained in the introduction video. Just go through that one. You will be familiar. Okay. Let us solve. As you can see, these two, if these two lines are parallel, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे ये लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल. Okay. One angle is over here, one angle is over here. एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, दोनों ऑपोजिट साइड पे. तो उसको हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर. तो ये एंगल है 35. तो सेम लाइन पे ऑपोजिट साइड पे कौन सा एंगल है? दैट इज CED. तो ये भी एंगल कितना रहेगा? 35 डिग्री. रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. So I'll write directly CED is equal to 35 degree. Reason is alternate interior angle. ये दोनों हमारे पैरेलल है, ओके, और ये है ट्रांसवर्सल. ओके, सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे मुझे दो एंगल चाहिए अपोजिट साइड पे. तो उसको हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर. ये एंगल मिल गया, ये ऑलरेडी गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन. दिस इज अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट. सो वेरी इजी. क्यों? Because it is in the shape of a triangle and sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. Same thing we can apply over here also. ये एंगल का नाम क्या है? I'll write it CDE plus ये एंगल का नाम क्या है? CED plus ये एंगल का नाम दिया हुआ है, that is angle DC is equal to 180. Property will be the same. Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. So CDE का वैल्यू कितना है? CDE का वैल्यू 53. CED का वैल्यू है 35 प्लस DC हमें फाइंड आउट करने का है is equal to 180. 53 plus 35 will give me how much? I think so it is 88. 3 plus 5, 8, 5 plus 3 is 8. Plus angle DC is equal to 180. Transpose. So angle DCE is equal to 180 minus 88. So angle DCE is equal to कितना आएगा? Let us solve it. कितना आएगा? That is 180 minus 88. Borrow this becomes 7, this becomes 10. 10 minus 8 is 2. Borrow this becomes 0, this becomes 17. 17 minus 8 will give me how much? 9. That is 92. That is our answer. Okay, I hope so. Must be clear with that solution. उतना भी tough नहीं था, I guess so. Let us go with the last one of this extra question video. Okay, this one may be looking complicated. Let us solve it. चलो solve करते हैं. And this is important question. May appear in your exam. Okay, so let us solve it. This one. How to solve? First of all, the given thing is like what, you know? PQ is parallel. PQ is parallel to ST. ये given है. Given, right? Not right. This angle is given. This angle is given. This angle is given. हमें find out करने का x and y. Okay. So first of all, we can identify P, Q, S. It is in the shape of a triangle. और ये triangle में एक angle पता है हमें 90 degree. Okay. X हमें नहीं पता. अगर मैं x से find out करूँ, y will be very easy. By which property? Triangle का property. तो y x से find out करना मेरे लिए necessary first. Okay. कैसे find out करूँ? Okay. Let us see. You can't say me y is equal to directly 28. क्यों? 28 is lying on a non-parallel. तो यहाँ पे alternate use मत करो. Most of the students says sir मैं ये use करता y is equal to 28 directly alternate नहीं बेटा. Alternate interior angle कैसे अप्लाई होता पता है? Now this line is parallel, this line is parallel. और ये रहेगा transversal. Correct? That alternate angles will be lying on parallel as well as on transversal. Parallel और transversal के ऊपर वो angle lie करेगा. अब यहाँ पे देखो ये angle transversal पे तो है but parallel line पे नहीं है. है? Parallel line पे नहीं है.
Okay, so we can't use that property y is equal to 28 using alternate Indian property apply नहीं होता क्यों 28 is lying on this transversal and this line is not parallel, remember that it is not parallel. Okay, so property हम इन दोनों पे apply नहीं कर सकते. Okay, तो कैसा करना obviously let me teach you. This is my PQ. Okay, इसके नीचे और एक पैरालाइन है कौन सा ST. Yes, T. ओके, दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल, ये लाइन मेरे लिए ट्रांसवर्सल, इसका नाम क्या है क्यू आर. ये एंगल हमें पता है 65. अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये 65 कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, पैरेलल लाइन पे अप्लाई कर रहा है और ट्रांसवर्सल पे भी, करेक्ट है ये एंगल. सो ये यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा ना ये भी कितना रहेगा 65. क्यों? Because these two will be equal based upon the alternate interior angle property. Correct? कैसा सर? Because ये एंगल भी पैरेलल पे लाई कर रहा है और ट्रांसवर्सल पे भी लाई कर रहा है. ये एंगल भी पैरेलल और ट्रांसवर्सल पे लाई कर रहा है. सो ये दोनों क्या होंगे इक्वल बेस्ड अपॉन अल्टरनेट इंटीरियर. बट यहाँ पे फिगर में क्या है? इट इज डिवाइड. इट इज डिवाइड. अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा. ये पूरा टोटल है 65. टोटल इज 65. ओके, ये दिस इज x and this is 28 but total is 65. Remember that. Okay, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे this angle भी करना रहेगा P Q R लिखेंगे पहले P Q R. This angle भी करना रहेगा P Q R and this angle that is Q R T. Q R T. Okay, so P Q R के पास दो एंगल. कौन से एंगल है x and 28. जब मैं दोनों का ऐड करूंगा तो किसका एंगल मिलेगा मुझे P Q R मिलेगा. करेक्ट नहीं करेक्ट? सो हियर इन द प्लेस ऑफ P Q R हम लिखेंगे x plus 28. Q R T का वैल्यू पता है हमें 65. So x is equal to 65 minus 28. That will give me how much? चलो सेपरेट कर लेते हैं 65 minus 28. ये 5 बन जाएगा, ये 15. 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7. 5 minus 2 is 3. So I'll be getting how much? 37 degree. ये मेरा x का वैल्यू. X 90 and y are lying in a triangle. So it is very easy for me to find out y using triangle property. There is x plus y plus directly मैं इसको लिखता हूँ 90 is equal to 180. Property का नाम रहेगा sum of angles of a triangle. x का वैल्यू हमें पता है 37. y I don't know plus 90 as it is equal to 180. y plus 127. 37 plus 90 will be 127 is equal to 180. So y is equal to 180 minus 127. So y will be equal to how much? इसको सेपरेट कर लेते हैं. दैट विल गिव मी मच 180 minus 127. ये 7 बन जाएंगे 10. 10 minus 7 is 3. 7 minus 2 5 0. So answer is 53. पांचों कॉलम में ये एक कॉलम लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा. ओके, आई होप सो. I think so familiar with the solutions. If any doubt is there, kindly comment it. If any problem related to exercise you have a doubt, comment with that problem. Okay, so I'm gonna make a video on that problem which you have a doubt. Okay, so thank you for watching the video.